Hello students, welcome once again to Icon Institute. Welcome to Icon CSCAT YouTube channel. My name is Anil Chaudhary and today we are going to have the second class on figures of speech. And I believe that जितने भी students इस वीडियो को देख रहे हैं, please ensure that इसका जो first part है उसे सबसे पहले देखना है. So you watch the first part and then you people come on this video. And I vouch all the students, ये दोनों videos अगर अपन एक बार complete करेंगे, you'll become so confident to handle any kind of question based on figures of speech which possibly may come in any exam. पिछले 20 सालों में स्टूडेंट्स इतने सारे एग्जाम्स को हमने देखा है और उन सब एग्जाम्स में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं, इन दोनों वीडियोस में स्टूडेंट्स वी हैव इंश्योर्ड दैट हर टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है. आप एक बार इन दोनों वीडियोस को ढंग से देखना, समझना. एंड स्टूडेंट्स एक बार, दो बार, और जब भी आप इन वीडियोस को देखो, हमेशा स्टूडेंट्स प्लीज़ इंश्योर दैट प्रॉपर टेबल चेयर पर अपन बैठे, कॉपी और पेन लेकर बैठे और जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, डेवलप अ हैबिट ऑफ नोटिंग ऑल द थिंग्स. मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि हम लोग प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते एंड दैट इज़ द रीज़न जब रिवीजन करना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. हमेशा स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, पर कोई भी लेक्चर, कोई भी सेशन, कोई भी सब्जेक्ट अगर अपन स्टडी करते हैं, नोट्स प्रॉपर बनाना, शॉर्ट हैंड में बनाना. तो दिस इज अ हैबिट विच यू पीपल शुड डेवलप. ओके, तो आज के स्टूडेंट्स इस पूरे सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस मैनी मोर फिगर्स ऑफ स्पीच एंड कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हम ऐसे डिस्कस करेंगे विच आर नॉट वेरी कॉमनली नोन एंड पॉसिबली दे कैन बी वेरी मच न्यू फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. बट एट द सेम टाइम फ्रॉम द एग्जाम्स परस्पेक्टिव, यस दीज आर इम्पॉर्टेंट. तो इन सबका बहुत अच्छा नॉलेज होना इज इम्पॉर्टेंट. And then students at the end of this class, we are going to discuss lots of questions also. करीब 6-7 questions मैं लूँगा जिनमें students I'll be discussing possibly किस pattern पर questions आते हैं. And once you will go through all those questions, you will actually come to know figures of speech के questions कैसे होते हैं और कैसे students हमें उन्हें handle करना है. Okay, तो start करें आज की class. Done, ready? Okay. बैठ गए proper table chair पर, कॉपी पेन दोनों तैयार है. Okay, done. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. उसके पहले सबसे पहले तो स्टूडेंट्स लेट मी थैंक दोज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स who have continuously who have been giving their support, love and affection to this channel. Let me thank those thousands of subscribers जिन्होंने इस चैनल को ज्वाइन किया and the hundreds of students okay, जिनके लाइक्स हमको मिलते हैं and जो कमेंट्स आप लोग पोस्ट करते हैं, they are truly motivating. इतने वंडरफुल कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स. एंड मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि सर कई सारे टॉपिक्स पर हम लोग अपने वीडियोस बनाएं, ग्रामर भी हम लोग कवर करें. स्टूडेंट्स एनीवे जिनके एग्जाम्स राउंड द कॉर्नर हैं, जितना मैक्सिमम होगा वी विल ट्राई डूइंग. कुछ टाइम का कंपल्शन भी है, ओके, कुछ फिजिकल क्लासेस की वजह से भी वी पीपल रिमेन बिजी. बट एनीवे स्टूडेंट जितना भी कंटेंट हम लोग पोस्ट करेंगे, आपके स्टे ट्यून विद अस. ईच एंड एवरीथिंग क्वालिटी कंटेंट होगा. इन अ नटशेल स्टूडेंट्स वी विल ट्राई टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, तो बस इसी तरह का सपोर्ट, इसी तरह से स्टूडेंट्स कीप शेयरिंग योर लव एंड प्लीज़ इंश्योर दैट ये जितनी भी वीडियोस अपन बनाते हैं, इन सब वीडियोस को आप अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें. ओके, उन्हें भी बोले इन वीडियोस के बारे में, चैनल के बारे में एंड जो भी उनके एग्जाम्स हैं. और ये जो वीडियोस हैं स्टूडेंट्स केवल किसी एक MBA एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा. आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को ले लो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ले लो, हर एक में आप देखोगे ये जो कंटेंट है दैट रिमेन्स कॉमन एंड दिस कंटेंट, दीज वीडियोस आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. आज का पहला फिक्स, आई नीड अ हेड काउंट बाय मॉर्निंग. अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इन अ क्लास सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग. नाउ इफ आई से आई वांट टू हैव अ हेड काउंट, तो व्हेन आई से हेड काउंट, इसका मतलब है मुझे सिर्फ हेड्स को काउंट नहीं करना है, और यहाँ पर हेड का मतलब है आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट. बट इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई सेड लेट मी हैव अ हेड काउंट. So head becomes the path of a student. So this also becomes a kind of figure of speech जिसे हम लोग कहते हैं synecdoche. I hope the point is clear. Okay, so finally student समझ लो, whole को रेफर करने के लिए उसके पार्ट को यूज करना. This becomes an example of synecdoche. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. The next one, metonymy. The second figure of speech is metonymy. And many times I have seen
students often get confused between metonymy and synecdoche. तो सबसे पहले तो let us try to understand what is the meaning of metonymy. So metonymy is the use of a linked term to stand in for an object or concept. Sometimes metonymy is chosen because it's a well-known characteristic of the concept. Here students, what is more important is well-known characteristic of the concept. Here students, what we generally do is, जब भी हम किसी पर्सन को रेफर करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग दैट नेम, हम उससे रिलेटेड किसी कैरेक्टरिस्टिक या उससे रिलेटेड किसी चीज़ को यूज़ करते हैं टू रेफर टू दैट पर्सन. So that becomes an example of metonymy. Now, if I take one example, the White House says that New Delhi should not support Moscow. Now try to understand what is the meaning of this sentence. When I say the White House, this becomes the official residence of the President of the USA. So students, जब मैं White House कहता हूँ, तो White House, the building is not saying anything. यहाँ पर White House का मतलब है, I'm actually referring to the President of the USA. I'm actually talking about the government of the USA. So when I say the White House says that New Delhi, अब यहाँ पर New Delhi का मतलब it is not the name of the city. New Delhi refers to India. Should not support Moscow. Again, Moscow refers to Russia. So now you people understand. अमेरिका चाहता है कि इंडिया रशिया को सपोर्ट ना करे. So instead of directly saying अमेरिका, इंडिया एंड रशिया, जनरली आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा, White House says that. So this becomes an example of a figure of speech which is known as metonymy. synecdoche में स्टूडेंट्स हम किसी होल को रेफर करने के लिए पार्ट यूज करते हैं, और इन केस ऑफ metonymy हम किसी को रेफर करने के लिए उससे रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट को, किसी सिंबल को रेफर करते हैं. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. डन. लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. अब जब मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, तो व्हेन आई से द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, लिटरली मैं यहाँ पर पेन और सोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ. तो व्हेन आई से पेन, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट थॉट्स, आइडियाज, द रिटन वर्ड्स. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सोर्ड, it actually refers to the military power. I mean to say that the power of thoughts, it is even stronger than the military power or the muscle power. तो पेन किसी और को सिंबलाइज करता है एंड सोर्ड किसी और को सिंबलाइज करता है. So this also becomes an example of metonymy. Then students, if you see, we will swear loyalty to the crown. Now see students, when I say crown, okay, try to understand when I say crown. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्राउन का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड. तो व्हेन आई से क्राउन, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द किंग. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग किंग, अगर मैं क्राउन कहता हूँ तो मैं एक्चुअली रेफर किसको कर रहा हूँ, किंग को. अब सेम इज द केस, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीचेस को सुनते हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इफ ही सेज मैं भारत के या इंडिया के खजाने पर किसी को पंजा नहीं मारने दूंगा. तो अब आप सोचो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब वो पंजा कहते हैं वो एक्चुअली किसको रेफर कर रहे हैं, ओके, बिकॉज कांग्रेस पार्टी का सिंबल क्या है, हाथ. अब उसी तरह से ओके, अगर कोई पॉलिटिशियन इंस्टेड ऑफ सेइंग बीजेपी, अगर वो फूल कहता है, वो कमल कहता है, तो दैट बिकम्स द सिंबल ऑफ द पार्टी. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं किसी पार्टी को रेफर करता हूँ तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द नेम, अगर स्टूडेंट्स मैं उसके सिंबल को यूज करता हूँ, उसके सिंबल के बारे में बात करता हूँ, तो यस, दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ metonymy. ओके, एंड देन स्टूडेंट्स, कैन यू गिव मी अ हैंड carrying this box up the stairs. तो यहाँ पर हैंड का मतलब क्या है, यहाँ पर हैंड का मतलब पर्सन नहीं, अंडरस्टैंड. यहाँ पर हैंड का मतलब है हेल्प, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग हेल्प आई एम आस्किंग फॉर अ हैंड. So when I'm asking for a hand, I'm actually trying to refer to help. I'm asking for some help. So even this becomes an example of metonymy. Okay? So all the students, I guess, synecdoche and metonymy, ये दोनों बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. And now students, coming on the next figure of speech, understatement. कई बार स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि हम चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं. हमने अपनी लास्ट क्लास में एक फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था, दैट वाज हाइपरबोल. हाइपरबोल में हम लोग जनरली क्या करते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं. तो अगर मैंने कोई भी चीज़ 2 या 3 बार बोली है, और अगर मैं कहता हूँ आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, तो दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल. अंडरस्टेटमेंट इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ दैट. अंडरस्टेटमेंट में हम किसी भी चीज़ को थोड़ा सा लेस सीरियस या लेस इंपॉर्टेंट करने की कोशिश करते हैं. अब कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया या मेरी गाड़ी को बड़ा सा डेंट लग गया, और मैं अगर इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बहुत बड़ा सा डेंट लगा,
और अगर मैं इतना सा कहूँ नहीं यार ठीक है, इट वॉज जस्ट अ स्क्रैच, तो दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टेटमेंट। अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम में फेल हो गया, नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सर मैं तो फेल हो गया इस एग्जाम में, अगर वो कहते हैं हाँ सर थोड़े से नंबर कम थे, तो इवन दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टेटमेंट। तो आई हैव सीन पीपल आर सो सेल्फिश, कहीं पर ऑन द बेसिस ऑफ वन सेल्फिश मोटिव, कहीं पर अपन चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं और कहीं पर स्टूडेंट्स हम चीज़ों को अंडरस्टेट करते हैं। तो अंडरस्टेटमेंट इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देयर आर सम एग्जांपल्स गिवन टू अस। It is just a scratch referring to a large dent. It is a little dry and sandy. Okay, so referring to the driest desert in the world. अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी डेजर्ट के लिए कहता हूँ इट इज अ लिटिल ड्राई एंड सैंडी, तो कई बार ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये आयरॉनिकल भी होते हैं। ओके, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज एन आयरनी। ओके, हमने फर्स्ट वीडियो में इसको कवर किया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के पहले पहला वीडियो जरूर देख लेना। ओके, एंड देन स्टूडेंट्स द वेदर इज कूलर टुडे, रेफरिंग टू सब जीरो टेम्परेचर्स। कोई आदमी कश्मीर में जाकर अगर कहे, अब जैसे मैं राजस्थान में भी देखता हूँ इट्स वेरी कूल्ड नाउ। ओके, अब मैं कश्मीर जाकर अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल इट इज अ बिट कूलर टुडे, so that becomes no doubt ironical. At the same time, this becomes a kind of understatement. Okay, this becomes a kind of understatement. It was interesting, referring to a bad or difficult experience, and that stings a bit, referring to a serious wound or injury. तो चीज़ों को स्टूडेंट्स लेस इंपॉर्टेंट करना, उसकी इंपॉर्टेंस को कम करना, that becomes an example of understatement. Now coming on students, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है, it is known as litotus. Okay, please mind the pronunciation. It will be spoken as litotus. Now what does litotus try to understand? Even litotus becomes a kind of understatement. आप देखोगे स्टूडेंट्स litotus भी it's a kind of understatement. But ये जो understatement होता है ये बहुत ही peculiar होता है स्टूडेंट। Okay, there is a specific way of understating something and only that way is known as litotus. Now what is that? Let us try to understand. जैसे मान लेते हैं किसी ने आपसे पूछा how was my performance? Now instead of saying it was good, it was excellent, अगर स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ okay it was not bad, अब आप देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूँ it was good, इसका मतलब है मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। okay, आई एम गिविंग यू मच अप्रिसिएशन और मैं उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा रहा हूँ, it was good, it was excellent. But instead of saying that, अगर मैं कहता हूँ it was not bad, okay, चल यार ठीक है उतना बुरा नहीं था, understand. So even this becomes a kind of understatement, and this kind of understatement is known as litotus. इसमें स्टूडेंट्स हम करते क्या हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो गुड है उसका अपोजिट लेते हैं बैड और उसके साथ नॉट लगाते हैं। आई रिपीट, गुड का अपोजिट लिया बैड और उसके साथ नॉट लगाया, so this becomes an example of litotus. I hope the point is clear. So litotus is a kind of understatement जहाँ पर हम किसी पॉजिटिव वर्ड का अपोजिट लेते हैं और उसे निगेट करते हैं, किसी पॉजिटिव वर्ड का अपोजिट लेते हैं और उसको निगेट करते हैं। जैसे गुड का अपोजिट बैड, और निगेट करना मतलब उसके साथ नॉट लगा देना। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट वाज गुड, इफ आई से इट वाज नॉट बैड, ठीक है इतना बुरा नहीं था, तो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ लिटोटस। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज नॉट द बेस्ट वेदर टुडे, so during a hurricane, I guess you people understand what is a hurricane. हरिकेन का मतलब है साइक्लोन। अब क्या अभी साउथ इंडिया में स्टूडेंट साइक्लोन आया हुआ है, तो हरिकेन बिकम्स अ साइक्लोन, टेम्पेस्ट, स्टॉर्म। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। सो कहीं पर तूफान है और मैं अगर कहता हूँ इट इज नॉट द बेस्ट वेदर टुडे, यस इवन दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ लिटोटस। सो थैंक यू मैडम, यू वोंट रिग्रेट इट। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू विल बी हैप्पी, इफ आई से यू वोंट रिग्रेट, इवन दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ लिटोटस। अगर मैं कहता हूँ you'll be happy, ये तो पॉजिटिव है, बट हैप्पी का अपोजिट देखिए you'll be sad, you will regret, और उसके साथ मैंने नॉट लगा दिया, you won't regret okay joining us, okay, so that becomes an example of litotus. I hope the point is clear. Yes, it's a kind of understatement. Coming on students, personification. Now when I talk about personification, that is giving human qualities to non-living things or ideas. तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को, ओके, या फिर स्टूडेंट्स कोई भी एनिमल को, ओके, गॉड को या किसी को भी अगर आप
देखिए एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, ओके, एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, तो दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो पर्सोनिफिकेशन के कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स, एंड दिस बिकम्स द मोस्ट कॉमन फिगर ऑफ स्पीच। आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमने इसके बारे में सुना भी होगा, एंड इस पर क्वेश्चंस कॉमनली देखे भी जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर्स nodded. Now definitely nodding is something which is done by humans, but still if I say the flowers nodded, this becomes an example of personification. The snowflakes danced, the thunder grumbled, the fog crept in, okay, the wind howled. So all these are examples of personification. An allegory is a story within a story. It has a surface story and another story hidden underneath. And the best example is George Orwell's Animal Farm. Now see students, ये किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच है where the author is very creative. यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑथर एक स्टोरी लिखता है एंड नो डाउट द स्टोरी इज इमेजिनरी, पर फिर भी जो कैरेक्टर्स ऑथर लेता है वो इस तरह के लेता है कि रियल वर्ल्ड में स्टूडेंट्स वो किसी और चीज़ को सिग्निफाई करता है, वो किसी और चीज़ को रेफर करता है, अंडरस्टैंड। नाउ इफ यू पीपल हैव हर्ड अबाउट एनिमल फार्म, इज वन ऑफ द लिटरेचर्स मोस्ट फेमस algories. The surface story is about a group of farm animals who rise up, kick out the humans, and try to run the farm themselves. The hidden story, however, is about the Russian Revolution, and each of the characters represents some figure from that revolution. The pets represent communist leaders like Stalin, Lenin, and Trotsky. The dogs represent the KGB, and the humans represent capitalists. The horses represent the working class, etc. Now, you people just imagine, ये जो पूरी स्टोरी है इट इज़ टोटली इमेजिनरी, पर यहाँ पर स्टूडेंट जो भी कैरेक्टर्स हैं वो रियल वर्ल्ड में किसी को रेफर करते हैं। तो सरफेस स्टोरी कुछ और है, बट अगर आप थोड़ा सा डीप जाकर देखोगे तो एक्चुअली वो ऑथर के रियल वर्ल्ड की स्टोरी को पॉइंट आउट कर रहा है। तो दैट इनडायरेक्ट रेफरेंस विच हैज़ बीन गिवन बाय द ऑथर, दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ एल्करी। ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स हैं जो बेसिकली स्टूडेंट्स एल्करीज होते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस नॉवल, यू माइट हैव हर्ड अबाउट लाइफ ऑफ पाई, यान मार्टल, एंड इस पर मूवी भी बन चुकी है। अब यहाँ पर जब मैं लाइफ ऑफ पाई को देखता हूँ तो ये जितनी कैरेक्टर्स हैं उनके पीछे स्टूडेंट जो रियल मैसेज है वो कुछ और है, अंडरस्टैंड। ओके, एनीवे, इफ आई कॉल लाइफ ऑफ पाई इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एल्करी, व्हाई आई एम सेइंग दिस, ओके, यू पीपल हैव टू जस्ट फाइंड आउट, एंड मोर ओवर दिस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस एल्करी। ओके, तो मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ, what is the real story which is hidden behind the surface story। तो इसे स्टूडेंट्स आप लोग पता करेंगे, थोड़ा बहुत गूगल करेंगे तो एल्गरी का मीनिंग समझ में आ गया। यस, व्हाट इज एल्गरी? द स्टोरी विच इज ऑन द सरफेस इज डिफरेंट, बट एक्चुअली द हिडन स्टोरी इज डिफरेंट। तो वो जो सरफेस स्टोरी है वो एक्चुअल में किसी दूसरी स्टोरी को रेफर करता है, दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गरी। और हम भी स्टूडेंट्स कई बार ऐसे स्टोरीज बनाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं, हम स्टूडेंट्स को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो यस, एल्गरी तो एक बहुत ही कॉमन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि हम लोग यूज करते रहते हैं, बट एक्चुअली हम कैरेक्टर्स कुछ भी लें, लेकिन हम बोलना क्या चाहते हैं, बस रियल स्टोरी तक पहुंचना। तो ये जो इनडायरेक्ट रेफरेंस है, बस इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एल्गरी। ओके, आई गेस द पॉइंट इज ओके, डन। नाउ कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच एंड अ वेरी कॉमन फिगर ऑफ स्पीच, इस पर क्वेश्चंस बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। A palindrome, and I'm very confident बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में तो सुना ही होगा। A palindrome is a type of word play in which a word or phrase spelled forward is the same word or phrase spelled backward। तो इसका सीधा सा मतलब है स्टूडेंट्स, उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक समान। मैं लेफ्ट से राइट पढ़ूँ या राइट से लेफ्ट, ओके, द वर्ड और द फ्रेज रिमेन्स द सेम। द बेस्ट एग्जाम्पल्स जैसे लेवल, ओके, लेवल, अब लेवल को स्टूडेंट्स हम कैसे भी पढ़ें, द स्पेलिंग इज गोइंग टू बी द सेम, सो दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोम। नेवर ऑड और इवन, अब इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी पढ़ोगे, द स्पेलिंग विल रिमेन द सेम। स्ट्रेस्ड डेजर्ट्स, रेस कार, ओके, डोंट नॉट, अब यहाँ से भी पढ़ेंगे तो इट बिकम्स डोंट नॉट। एंड बोरो और रॉब, अगेन स्टूडेंट्स इफ यू रीड फ्रॉम हियर इट बिकम्स बोरो और रॉब, सो दिस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलिंड्रोम? उल्टा सीधा एक समान। हिंदी में भी स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे पैलिंड्रोम्स होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई यूज्ड टू प्ले विद माय सिबलिंग्स पैलिंड्रोम्स बनाने, और जो जितना लंबा चौड़ा पैलिंड्रोम बना सके, तो वी यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ गेम आल्सो। पैलिंड्रोम इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसका मतलब है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। आप कैसे भी पढ़ें,
the word or the phrase remains the same. Okay, do understand. Palindrome. Coming on, students, what is an idiom? I guess all the students, you people very well understand what is the meaning of an idiom. तो idiom का बेसिक मतलब क्या होता है? यहाँ पर स्टूडेंट्स हम वर्ड्स कुछ और यूज करते हैं, बट इसका जो हिडन मीनिंग होता है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो कुछ और होता है. और कई बार ओके वी सी दैट जब हमें उसका एक्चुअल मीनिंग पता नहीं होता, वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड आल्सो. On idioms of phrases पर in many of the exams you people may have direct questions. Okay, और स्नैप जैसे पेपर्स में या किसी भी एग्जाम में, okay, चाहे वो CUET हो जाए, चाहे वो स्टूडेंट्स BBA MBA का कोई भी एग्जाम हो जाए, idioms पर क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं. Okay, so idiom is a phrase that when taken as a whole has a meaning you wouldn't be able to deduce from the meanings of the individual words. Okay, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. वी कैन किल 2 birds with 1 stone. Even thus becomes an example of an idiom. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ना तो कोई बर्ड्स है ना कोई स्टोन है. अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से इज एक तीर से दो शिकार. तो हिंदी में जब मैं कहता हूँ एक तीर से दो शिकार, इवन दिस बिकम्स एन इडियम. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या होता है? ओके, ओकेजनली, कभी कभार. आई सी सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे जॉइन द क्लासेस वंस इन अ ब्लू मून. तो ब्रेक अ लेग, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक अ लेग? जब स्टूडेंट्स हम किसी को ऑल द बेस्ट कहते हैं, व्हेन वी गिव आवर बेस्ट विशेस, ओके, सो व्हेन वी बिड ऑल द बेस्ट, दैट इज टू ब्रेक अ लेग. तो ब्रेक अ लेग, दैट लिटरली डज नॉट मीन टू ब्रेक अ लेग. इट एक्चुअली मीन्स ओके बिडिंग ऑल द बेस्ट एंड गिविंग बेस्ट विशेस टू समवन. ओके, और इन सब इडियम्स के पीछे स्टूडेंट्स आप देखोगे कोई ना कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, कोई ना कोई रीजन ऑफ ओरिजिन होता है. और कभी स्टूडेंट्स मौका मिले, नॉट राइट नाउ बट जब भी मौका मिले, आप लोग अगर इसके पीछे के ओरिजिन को भी समझोगे, उसकी स्टोरी को भी समझोगे, तो दैट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आएगा. ओके, चलिए देन स्टूडेंट्स, टू बर्न अ कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब है डबल एनर्जी एफिशिएंसी, डबल एफिशिएंसी से काम करना. So if I tell all the students, if you really want to clear your exams, you people have to burn the candle at both the ends. इसका मतलब है हमें डबल मेहनत करनी, हमें डबल एफिशिएंसी से काम करना. तो हियर कैंडल के बारे में कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, बट हम लोग सिग्निफाई क्या करना चाहते हैं, यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, स्पिल द बीन्स, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिल द बीन्स? स्पिल द बीन्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्सीडेंटली सीक्रेट को रिवील कर देना. ओके, तो एक्सीडेंटली सीक्रेट को रिवील कर देना. तो जो सीक्रेट है एक्सीडेंटली वो जब सबके सामने आ जाता है, दैट मीन्स स्पिल द बीन्स. ओके, अब इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स और भी होते हैं, जैसे to kick one's bucket. So when I say to kick his bucket, what does it mean? To kick one's bucket, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स टू die. Okay, yes, actually इसका मीनिंग होता है to die. अच्छा, अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा? पॉसिबली जस्ट अ थिंग. फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने सोचा कि यस आई वांट टू कमिट सुसाइड नाउ. वो वॉशरूम गया, बकेट लेकर आया, उसे उल्टा किया, उस पर खड़ा हो गया और फैन से फंदा लगा लिया. अब उसके बाद स्टूडेंट्स, टू हैंग, व्हाट विल ही डू? Yes, he will kick the bucket. Yes, when he will kick the bucket, that means he is committing suicide. And in general sense, if someone kicks his bucket, that means he is no more, he died. चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. स्टूडेंट्स, if you really want to succeed in these exams, you will have to move mountains. Now you people try to understand. When I say move mountains, what does it mean? Yes, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स खूब मेहनत करनी पड़ेगी. या अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, you will have to burn the midnight oil. Yes, इसका भी मतलब होता है स्टूडेंट्स, you people have to work hard and you people will have to walk an extra mile. Even that becomes an example of you people will have to work hard. तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर अपन देखें तो बहुत सारे idioms पॉसिबल हैं. तो एनीवे स्टूडेंट्स, फिलहाल तो हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, बट आई मस्ट रिकमेंड एंड मोटिवेट ऑल द स्टूडेंट्स, खूब सारे idioms हमें सीखने चाहिए. एंड हमारी लैंग्वेज को स्टूडेंट्स idioms बहुत फ्लेवर ऐड करते हैं, बहुत कलरफुल बना देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं. अंडरस्टैंड? ओके, चलिए, नाउ कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एन इडियम, you people will have to understand what is a proverb. Now many times I see students often get confused between an idiom and a proverb, but you people understand proverb कई बार direct हो सकता है. A proverb is basically a small saying, okay, and it has a piece of advice. I repeat, proverb is basically a small saying and it has a piece of advice. जैसे जैसे जैसे, for example, when I say don't cry over spilt milk, now this becomes a piece of advice. At the same time,
दिस बिकम्स एन ईडियम ऑल्सो. ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स की जो प्रॉवर्ब है वो कभी ईडियम नहीं हो सकता. समटाइम्स सम प्रॉवर्ब्स आर इडियोमैटिक इन नेचर, बट एनीवे प्रॉवर्ब इज अ सेइंग, और इसका बेसिक मतलब होता है, बेसिक पर्पस होता है टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस. ओके, चलिए लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स. मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क. ओके, तो बहुत सारे लोग मिलकर एक्चुअली काम इंप्रूव नहीं होता है, कई बार वो स्पॉइल हो जाता है. Strike while the iron is hot. Yes, what a wonderful proverb it is. Honesty is the best policy. So that becomes a direct proverb, a piece of advice. The grass is always greener on the other side of the fence. Don't judge a book by its cover. Even this becomes an idiom, it becomes a proverb. Okay, so purely on the basis of what is visible on the surface. On the basis of that, we should never draw any conclusion. And better late than never. Okay, तो all the students, अगर अभी तक आपने बहुत अच्छी मेहनत नहीं भी की है, the last proverb is specially for you. तो कभी भी अच्छे काम के लिए हम लोग लेट नहीं होते. हालांकि स्टूडेंट जब जागो तभी सवेरा, दैट इज ओके, बट टाइम पर जगना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ जब एग्जाम्स एकदम पास में आते हैं, देन दे बिकम सीरियस, बट आफ्टर दैट वंस द टाइम इज लॉस्ट, देखिए नथिंग कैन बी डन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. After understanding what is a proverb, the next figure of speech is aphorism. It's a short statement of a general truth, insight, or good advice. It is roughly similar to a saying. So you people try to understand aphorism and proverb में वैसे कोई बहुत बड़ा difference नहीं होता. Even this becomes a small saying, a piece of advice. Some insight is there, some intellect is there in that. So this piece of advice, this insightful statement is known as aphorism. And it can also be called as adage. इसे स्टूडेंट्स हम लोग adage भी कह सकते हैं. नाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट है, इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ट्रीज, इट विल स्पेंड इट्स होल लाइफ थिंकिंग इट इज स्टूपिड. So yes, this becomes an example of aphorism. What an insightful statement it is. Eat to live, don't live to eat. Yes, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, their purpose of life seems to be खाओ पियो मौज करो. But students do understand life is not only meant for that. There is some bigger goal and you people will have to discover it. तो सिर्फ खाओ पियो मौज करो, that is not good. चलिए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं. You can kill a man, not an idea. क्या बात है. एक और स्टूडेंट्स बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है. Not all the armies of the world can stop an idea whose time has come. So idea is very powerful. Okay, तो स्टूडेंट्स ये जितनी एग्जांपल्स हैं, all are examples of aphorism. Okay, understand. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. Truism. Now see, when I talk about truism, it's a kind of statement, it's a kind of piece of advice, it's a kind of quotation. But this particular piece of advice, this particular statement, this particular quotation, हम इतनी बार सुन चुके हैं, it is actually no longer appealing. Okay, you people have actually become bored out of it. It is no longer appealing. ऐसे बहुत ही रिपीटेड जो स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत ही रिपीटेड जो पीस ऑफ एडवाइस होता है, उसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं ट्रूइज्म. आप लोगों ने स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को कई बार ये बोलते हुए सुना होगा, बेटा अगले 4-5 साल मेहनत कर ले ताकि नेक्स्ट 40-50 ईयर्स बहुत अच्छे निकल जाएंगे. अब सर ये स्टेटमेंट हम इतनी बार सुन चुके हैं, इट इज नो लॉन्गर मोटिवेटिंग अस. वन मोर एग्जाम्पल, दैट फेमस कोट, the journey of 1,000 miles start with a single step. Even this becomes an example of truism because हम इतनी बार सुन चुके हैं कि this is no longer appealing now. तो ऐसे जो statements होते हैं, ऐसे जो sayings होते हैं जिसे अपन बहुत बार सुन चुके हैं, इसे students हम लोग कहते हैं truism. Okay? So try to understand, truism is an aphorism that is trite. You people understand what is the meaning of trite? Trite is something which has become cliche. Okay, sorry, it has become cliche. Just 1 second, let me write the spelling properly. Cliche. Okay, I know that one of the students was asking in the comments, sir, what is cliche? Cliche का basic मतलब होता है something which is very common, something which is very commonly used. So anything, okay, which is very common, and because of that, we people have actually got bored out of it. उसे students हम लोग कहते हैं cliche. So cliche is something which is dull, which is repetitively used, okay, which is very commonplace,
So that is known as cliche. I hope the point is clear. Done. Stale का मतलब भी वही होता है students, dull, boring, etc. Okay, overly general or meaningless. So that becomes truism. Okay, done. चलिए आगे बढ़ते हैं students. Pun. Now what is pun? Let us try to understand. Pun is all about creating some humor, okay, using the homonyms. आपने देखा होगा इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होमोनिम्स होते हैं, सिमिलर वर्ड्स. पॉसिबल इनका साउंड सिमिलर होता है, कई बार उनके मीनिंग सिमिलर होते हैं, कई बार उनकी स्पेलिंग सिमिलर होती है. तो यूजिंग दीज होमोनिम्स, यूजिंग द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, when we try to create some humor, so that becomes an example of a pun. Okay, जैसे I'll take one example. CBSE. Come on, tell me students, what is the full form of CBSE? Yes, possibly सबको पता होगा. Central Board of Secondary Education, isn't it? Is it correct? No, this is not correct. Why, sir? Because यहाँ पर मैंने क्या लिखा? Board, BORD. जबकि students board की spelling क्या होती है? BOARD. So instead of writing Central Board of Secondary Education, I wrote Central Board of Secondary Education. So yes, sorry, this becomes an example of a pun. एक और students बड़ा famous statement है, which was actually given by Abraham Lincoln. He said that democracy is a kind of system where the government is by the people, of the people, and for the people. Okay, but the modern definition of democracy says it is a kind of system where the government is by the people, okay, it is of the people, and it is for the people. Now you people try to understand. Okay, तो हमने इनको चेंज कर दिया. Yes, this becomes an example of a pun. तो pun का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को यूज करना, कुछ ह्यूमर क्रिएट करना आउट ऑफ दैट. एंड आई डू हैव okay some wonderful examples here. The tallest building in town is the library. It has thousands of stories. How is it possible? The tallest building in the town is the library. अब स्टूडेंट्स आप देखो किसी भी बिल्डिंग में देयर आर मल्टीपल स्टोरीज, और स्टूडेंट्स स्टोरीज का मतलब कहानियां भी होती है. तो लाइब्रेरी में कई सारी कहानियां हैं, तो हमने स्टूडेंट्स उससे रिलेट कर दिया. एंड इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज, देयरफॉर द टॉलेस्ट बिल्डिंग इज द लाइब्रेरी. So that becomes an example of a pun. One more example is given. Yes, I can't remember which state my wife wanted to visit for our next vacation. It's okay, Alaska. Actually, students, husband ने क्या बोला? I'll ask her. I'll ask her. But actually, sound कैसे आया? Alaska. Anyway, students, वो wife वहीं तो जाना चाहती थी. Understand? Alaska. I'll ask her. So even that becomes an example of a pun. I remember one more such pun. Before Xi Jinping, Hu Jintao was the president of China. And once what happened was the president of America, he was visiting China. अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपने सेक्रेटरी से बोला कि भाई चाइना जा रहे हैं तो कुछ बताओ तो सही, हु इज द प्रेसिडेंट देयर, हु इज द प्रेसिडेंट देयर. एंड द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट itself was Hu Jintao. Okay, now see the pun here. So the president asked, who is the president of China? And the secretary replied, who is the president of China? Arey, that's what I'm asking, who is the president? And the secretary said, that's what I'm saying, sir, who is the president? Okay, Hu Jintao. So who is the president of China? So students, this becomes an example of a pun. Chaliye, coming on students, anachronism. Anachronism. Now to understand what is the meaning of anachronism, you will have to first understand what is the meaning of chronos. Okay, so this word refers to time. Okay, so when I say anachronism, that means something which is against the time, something which is not suitable as per the time which is given in the piece of literature. So students, when I talk about anachronism, it's a kind of situation जहाँ पर टाइम हमने कुछ और रेफर किया, बट वहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया जो उस टाइम में पॉसिबल ही नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट अ नॉवल एंड इफ आई टेक द कैरेक्टर्स लाइक अकबर एंड बीरबल, और मैं उस नॉवल में लिखूं स्टूडेंट्स कि अकबर ने बीरबल को फ़ोन किया. नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड, अकबर एंड बीरबल के ज़माने में देयर वर नो फोन्स, देयर वर नो मोबाइल्स, स्टिल इफ आई राइट कि अकबर कॉल्ड बीरबल, so that becomes an example of anachronism.
something which is not suitable with respect to time, something which is against time. So that becomes an example of anachronism. And even students in the famous novel Julius Caesar, written by Shakespeare, yes, there is an example of anachronism. Okay, to understand. Now, wonderful students, एक और बहुत अच्छा सा विजुअल आपके सामने है, caricature. Now, what is the meaning of caricature? You people might have seen. कई बार न्यूज़ चैनल्स पे भी एंड न्यूज़पेपर्स में स्पेशली कई सारे पॉलीटून्स आते हैं जहाँ पर अपन पॉलिटिकल पर्सन्स को बहुत एग्जैजरेट करके दिखाते हैं, कार्टून्स बना देते हैं, एंड यूजिंग देम, okay, using the cartoons we try to give a message. So that is known as caricature. So caricature basically refers to making some cartoons and exaggerating something and trying to give some message. Okay, तो ये बहुत ही आयरॉनिकल होते हैं, सरकास्टिक होते हैं, एंड ये जो कार्टूनिस्ट होते हैं, these people are real gems. Their creativity is fantastic. Okay, their innovation, they think in a very different manner. Okay, तो कार्टूनिस्ट होना, that's very interesting. Okay, and न्यूज़पेपर्स में स्टूडेंट्स एंड कई सारे न्यूज़ चैनल्स पर भी we see such caricature. Okay, commonly they keep coming in the newspapers and all. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. Genre is a category of literature. Okay, do understand genre का बेसिक मतलब होता है कैटेगरीज. हम कोई भी मूवी देखते हैं स्टूडेंट्स, हर मूवी का भी एक पर्टिकुलर जॉनर होता है, अंडरस्टैंड. ओके, इन द सेम मैनर जितनी बुक्स होती हैं उन बुक्स का भी स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर जॉनर होता है. सम बुक्स कैन बी बायोग्राफीज, सम बुक्स कैन बी ऑटोबायोग्राफीज, some books can be science fiction, some can be science non-fiction, some can be self-help books. Okay, what are these? Okay, some can be dramas. What are this? What are these? These all are examples of genre. But do understand, ये सब के सब genre के example हैं. Genre का मतलब और कुछ नहीं होता, categories. And now students, before we come on the questions, these are few more figures of speech. I want all the students, these figures of speech, they actually become a home assignment for you people. एक एक को स्टूडेंट्स नोट करो, और इन सब पर क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं. एंड पॉसिबली स्टूडेंट्स इसमें से कुछ हमने डिस्कस भी किया था, जैसे एंटीथेसिस वी पीपल हैव ऑलरेडी टेकन इन द लास्ट वीडियो. बट बसाइड्स एंटीथेसिस और भी बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इसे पॉज करो, नोट करो. ओके, और इसमें से स्टूडेंट्स कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए, आप लोग हमें बता दें कमेंट बॉक्स में. I will explain in the upcoming videos. इसे नोट करना नहीं भूलेंगे. And now we are going to start with the questions. चलिए क्वेश्चन अपन लेना स्टार्ट करें उसके पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. Okay, you people have to know this also. Now, what is the meaning of a transferred epithet? You people first of all understand epithet का मतलब होता है it's an adjective. I hope you people do understand what is the meaning of an adjective. Adjective basically stands for such words which show the quality of a noun or a pronoun. जैसे for example if I say this is a beautiful jacket. So when I say beautiful jacket, jacket becomes a noun and beautiful becomes an adjective. So epithet का मतलब होता है adjective. Now the question is what is the meaning of transferred epithet? Now here students what actually we do is कोई adjective जिस noun के लिए आना चाहिए हम उसके साथ use नहीं करते और उसे किसी और के साथ use करते हैं. So that becomes an example of transferred epithet. I'll take one example to make you understand. जैसे for example if I say it's a happy day. Now you people understand when I say it's a happy day, how is it possible a day is happy? A day cannot be happy. Day तो student जो routine का होता है जो regular होता है वही होता है. So when I say it's a happy day, okay, actually the day is not happy. I am feeling happy today. So instead of saying I am happy, if I say the day is happy, okay, or it's a happy day, this becomes an example of transferred epithet. बेटा happy कौन है? Happy तो हम है ना? Okay, so instead of saying we are happy, so if I say it's a happy day, so that becomes an example of transferred epithet. So even on this, we have seen the questions. Anyway students, ये जितनी भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, एक बार अगर आप इन सबको समझ लेंगे तो इसके बियॉन्ड कुछ आएगा, इसके कोई भी चांसेस नहीं है. आराम से स्टूडेंट्स इन्हें नोट करो. ओके, एंड रेफर गूगल डिक्शनरी बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज फिगर्स ऑफ स्पीच विथ एग्जाम्पल्स. चलिए नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चंस.
The child is the father of the man. So come on, tell me students, कौन सा figure of speech हम यहाँ पर use कर रहे हैं? I guess सबकी meanings हमको पता है, except the second option. Yes, what is the correct answer? Oxymoron cannot be the correct answer because oxymoron basically stands for using two opposite words together. Third option, antithesis. Even this is not correct because it's all about using two opposite concepts in a sentence. And hyperbole का मतलब तो exaggeration होता है. So when I say a child is the father of the man, okay, it's a very powerful statement. Students, जब हम कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, एक ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे वो मैसेज बहुत इफेक्टिवली, बहुत अपीलिंगली कम्युनिकेट होता है, तो दैट इज नोन एज एपीग्राम. So actually the correct answer here is epigram. Let us take few more examples. So when I say no pains, no gains, no pains, no gains, even this becomes an example of epigram. One more example can be, there is only one thing which is constant and that is change. There is only one thing which is constant and that is change. So to highlight the importance of change and to say that things will keep changing, I made the statement that there is only one thing which is constant and that is change. So even the statement becomes an example of epigram. तो किसी भी चीज़ को बहुत इफेक्टिवली जब आप प्रेजेंट करते हैं किसी छोटे से सेंटेंस में एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं, तो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ एपीग्राम. ओके, so you people please try to understand the pattern of asking questions. इसी तरह से a sentence will be given to us and we are supposed to find out which figure of speech we are using in that. चलिए, coming on students. Her cheeks are big red apples from the cold. Yes, what is the correct answer here? When we compare two unlike things, it becomes either a simile or a metaphor. पर सिमिली में स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना हमेशा लाइक या फिर एज यूज करना कंपलसरी होता है, isn't it? तो एनीवे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर चीक्स को कंपेयर कर रहा हूँ एप्पल से. व्हेन आई से हर चीक्स आर बिग रेड एप्पल्स, yes, it becomes an example of metaphor. Okay, anyway, personification is not possible. There is no personification here. And assonance का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स को लेना where we are actually repeating the vowel sound. हम एक पर्टिकुलर वॉवल साउंड को जब रिपीट करते हैं किसी भी एक सेंटेंस में, ओके, तो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ एसोनेंस. इसे हमने कवर किया था फर्स्ट वीडियो में. ओके, चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3. Pride goeth forth on horseback, grand and gay. Now you people understand. I'm saying that pride goeth, this actually means goes. So pride goes forth on horseback, grand and gay. So which is the correct answer? Actually, horseback पर कौन जाता है? कोई human जाता है. But instead of human, if I say pride goes, okay, that means what I'm doing? I'm trying to personify. So yes, it becomes an example of personification. So oxymoron is not the correct answer. चारों options को compare करोगे, third option becomes the correct answer. And BOD तो वैसे भी same है. कुछ गलती रह गई, but anyway students, the correct answer is personification. Okay, चलिए, coming on the next question. Please pause it, think and try to give the answer. Here is the smell of blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Yes, which is the correct answer? Euphemism is not correct. हमने इसको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. किसी भी हार्श चीज को बहुत सॉफ्टली कहना. ओके, तो किसी भी स्टेटमेंट जो कि बहुत हार्श है, इंस्टेड ऑफ ऑफेंडिंग समवन, जब हम बहुत सॉफ्टली उसे कहते हैं, तो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ यूफेमिज्म. ऑक्सीमोरॉन इज नॉट करेक्ट. हाइपरबोल, yes indeed, the correct answer is third option, hyperbole. Hyperbole is the correct answer because what I'm saying is ब्लड की स्मेल इतनी है कि सारा परफ्यूम मिलकर भी इसे स्वीटन नहीं कर सकता. तो yes, what is this? This is exaggeration and this becomes an example of hyperbole. And litotes हमने just देखा था, it becomes the opposite of hyperbole. It becomes understatement. Okay, so yes, वो वाला example, good and bad वाला, good and not bad. Okay, चलिए, coming on students, question number 5. The wind lies asleep in the arms of dawn. Yes, which is the best answer here? A very, very simple question. Now, when I say the wind lies asleep, okay, what I'm doing?
I'm actually trying to personify venge. So here the best answer is personification. Absolutely. And coming on students, the last question of the class. There was a loud thump coming from upstairs. Thump, thump, thump. So what is this? अब स्टूडेंट जब हम चलते हैं तो जो थंपिंग साउंड होता है उसी से वर्ड बन गया थंब. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचुरल साउंड से जब वर्ड बनता है तो यस दैट इज नोन एज ओनोमाटोपिया. So the correct answer is fourth option, onomatopoeia. Okay, and इसको भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था. तो स्टूडेंट्स आई बिलीव दैट ये जितना भी डिस्कशन हमने किया है ये पूरा डिस्कशन आपको बहुत हेल्प करेगा फाइनली फिगर्स ऑफ स्पीच पर बहुत अच्छी कमांड बनाने के लिए. आज इन फिगर्स ऑफ स्पीच में अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट जो हम मिस करें. ओके, एंड प्रॉपरली स्टडी करके जाओ. अदरवाइज क्या होता है क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन देखते हैं देन वी गेट कंफ्यूज. अरे यार सर ने कुछ बताया तो था, पढ़ा तो था, बट फिर स्टूडेंट्स मेक्स नो सेंस. सो दैट इज द रीजन बिकम कॉन्फिडेंट. गूगल करो एमसीक्यूज ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे. एंड 50, 40, 30, 50 क्वेश्चन अगर अपन सॉल्व कर लें विल बिकम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, तो थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून. एंड आने वाले वीडियोस में भी स्टूडेंट्स हम लोग काफ़ी कुछ कंटेंट कवर करेंगे. एंड जो भी आपने कमेंट में लिखा है आई विल ट्राई टू कवर दोज थिंग्स. सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक.